संज्ञायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि प्रकृति स्वाधिष्ठाय सम्भवात्मान्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय भवामि युगे युगे। संस्कृत दिवस। हमारे भारत हर वर्ष श्रावण माह के पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत दिवस सबसे पहली बार वर्ष 1969 में मनाया गया था। इस दिन हिंदुओं का एक और मुख्य त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। संस्कृत को इस दिवस को ऋषि मुनियों को याद करने की भाषा अति परिष्कृत और परिमार्जित है। वेदों की रचना होने के कारण इसे वैदिक भाषा भी माना जाता है। संस्कृत आज के देश में कम बोले जाने वाली भाषा बन गई है। हम सब संस्कृत का महत्व जानते हैं। इसी के कारण हमें दूसरी भाषाओं को सीखने तथा बोलने में मदद मिलती है। इसी के द्वारा हमें दूसरे भाषाओं के व्याकरण को पहचानने मिलता है। संस्कृत एक सुंदर भाषा है। संस्कृत दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य संस्कृत को बढ़ावा देना तथा आम जनता को शिक्षित करना है। लोगों की सोच को बदलने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुगृहीतो अस्मि। संस्कृत श्लोकाः उच्चारणं कुर्वन्ति ते मोक्षं प्रति आगच्छन्तु इति। मम प्रिय प्रियांश सहयोगी मम प्रिय छात्र छात्र अहम जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद अभी मैं गाने जा रही हूँ। रासे हरि मीह विहिता विलासम रा
परिमिह विहिता विलासम्। संस्कृतभाषायाः उपरि एकं गीतं गायामि। सरलभाषा संस्कृतं सरसभाषा संस्कृतं सरलभाषा संस्कृतं सरसभाषा संस्कृतं सरस सरलमनोज्ञमङ्गलदेवभाषा संस्कृतं मधुरभाषा संस्कृतं मृदुलभाषा संस्कृतं मृदुलमधुरमनोहरामृततुल्यभाषा संस्कृतं दिव्यभाषा संस्कृतं देवभाषा संस्कृतं भेदभावविनायक संस्कृतं शास्त्रभाषा संस्कृतं राष्ट्रभाषा संस्कृतं भुवनभाषा संस्कृतं भवनभाषा संस्कृतं सरलभाषा संस्कृतं सरसभाषा मधुरभाषा संस्कृतं। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं। धन्यवाद। भागं प्रति हार्दिक धन्यवादं करोमि। थैंक यू स्मितश्री मैम। अधुना शास्त्रीय नृत्य परिवेषणं करिष्यति कुमारी स्निग्धा। I request Snigdha to come over the stage and to sing a slok. जटातविगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवनन्दनम्बिताम्बुजङ्गदुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमण्डिनाडमट्टमरुवयो चकारचण्डताण्डवो तनोतु शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमण्डिलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकृताक्षधोरणे निरुद्धदुद्धरापदे क्वचित् दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि। ॐ नमः शिवाय। Thank you Agastya for the Shiv Tandav. अधुना अन्य एकः शास्त्रीय नृत्य परिवेषणं करिष्यति कुमारी सुदीप्ता. Again, a traditional dance will be presented in front of you by Sudipta. सर्वेषां कृते सुप्रभातम्। ऐगिरि नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेसिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्णे सुरवरवर्षिणि दुरधरदर्शिनि दुरमुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किलमशमोषिणि घोषिरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिचालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटवगञ्जिनि कैटवमञ्जिनि राशरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। धन्यवादः। परिवेषणं कर्तुकाभ्य धन्यवादं करोमि। I thanks Ashvita, Ankita and Arushi for कर्तुम् इच्छन्ति ते कर्मपूर्वक मुझे आगत्य श्लोकावृत्तु कुर्वन्ति इति। I request those who are interested in singing a slok can come up on the stage, making a quick cue. महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
इस श्लोक का अर्थ है गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा है। इन सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम है। यह श्लोक भगवान को याद करने में एवं प्रार्थना करने में काम आता है। मेरा दूसरा श्लोक, त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस श्लोक का अर्थ है आप ही मेरे माता और पिता हैं, आप ही मेरे परिवार और मेरे दोस्त हैं, आप ही मेरे विद्या और धन हैं, आप ही मेरे सब कुछ हो। हे भगवान, हे भगवान। शुक्रिया। गुणाधीशाय गुणप्रवेणी एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। शुक्रिया। तमे सर्वं मम देवदेव। I would like to request respected principal sir to come over stage and speak few lines of International Sanskrit Day. अखंड मंडलाकारं व्याप्त जेन चराचरं तत्पददर्शितं जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। It is customary to start any speech reciting a Sanskrit shloka. What is the reason? You see, mantras and shlokas, they produce some sort of waves. Yes, physics people, they must be understanding there is a concept like modulation of waves. So whenever we are worshipping God, or that means we are welcoming any energy. God means actually we have given names, but actually we are inviting some energy. And energy comes in the form of a waves. So whenever we recite a shloka or mantra, in the surrounding with the same wave, with the same frequency, if some other waves will be available, so then that gets modulated. That we say that interference, constructive interference, destructive interference, you know. Anyway, Sanskrit means we understand the reciting of mantras and shlokas. But if you see the entire literature of Sanskrit, hardly 5% of it is for mantras and shlokas. The remaining 95% is enriched with the concepts based on social justice, health and wellness, economics, mathematics, like that lot many theories are there, which you call them Samhitas. I want to tell you that why Sanskrit is so important. Listen, the primitive language was Prakrit. That was derived from the sounds produced in nature or from the living creatures, sounds produced by the living creatures. That is Prakrit. And this Prakrit is rectified and purified. That is for Sanskrit. The meaning of Sanskrit is something purified. Sanskrita, Sanskar. So if anything is purified or rectified, that is for Sanskrit. So Prakrit, Sanskrit is the second version of or the modified version of or rectified version of Prakrit. Sanskrit, somebody that we started this function that Sanskrit is our mother tongue. No, it is the international language, that is the language of a God, we say. Sanskrit is the mother of all languages. To us, it was not known to us that Vedas, that is the treasure of all knowledge of the universe. It is muscular, Gothe, which are the Western philosophers, they could understand
that whether whatever discoveries and inventions that we are doing today that is amazing us, it is already there in the Vedas in the coded form. That is why you are surprised to know that in German, Sanskrit is the compulsory subject in all schools. It is because they know, if you understand Sanskrit, that the remaining 95% which is hidden for us, we are not knowing, only we know mantras, surpas and all this. The remaining 95% which is the hidden treasure, with which we can discover the mysteries of the universe. Whatever discoveries or inventions that our technocrats or scientists they are presenting us, it is already there. It is already there. So Sanskrit is a very rich language. Although we have not taken Sanskrit as optional in the school, but one should read Sanskrit, should understand Sanskrit, so that we can excel in all fields. Anyway, I will not take much of your time because already we have spent 1, 2, 3 periods for this doing, but we are not doing. The Western people, particularly in German, they are giving so much importance to Sanskrit. One experience of mine, I have attended one principal conference that was organized by this Gothe Institute, Calcutta. Purnasya Purnamadaya Purna Eva Vasishyate. How it is mathematics logo? Because here Purna means something infinite. Infinite. Infinite plus infinite is infinite. Infinite minus infinite is infinite. Infinite into infinite is also infinite. So God has no shape. It is infinite. Thank you. Karomi. Thank you, sir, for a wonderful speech. अस्य विश्व संस्कृत दिवसस्य कार्यक्रमस्य सांकेतिक धन्यवाद समर्पणं करोति कुमारी वंशिका। सर्वभय नमस्कारः। इदानीं वयं विश्व संस्कृत दिवसस्य कार्यक्रमस्य अन्तिमघट्टे स्मः। अहं वंशिका सर्वभय धन्यवादः समर्पयामि। धन्यवादः। Swapnil and Manpreet to come over the stage and sing the slow. महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। धन्यवाद। अहिंसा परमो धर्मः धर्महिंसा तथैष च। इसका अर्थ है अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए अहिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। धन्यवाद। कार्यक्रमस्य अन्तिमघट्टे स्मः। अहं वंशिका सर्वभय धन्यवादः समर्पयामि। धन्यवादः।